फ़र्ज़ करें किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, वहाँ 50 टीचर होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ टीचर्स होने चाहिए। वो इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करा लिया, सब शहरों में रहने लगे। रूरल एरियाज़ में या फार फ्लंग एरियाज़ में उतना बड़ा कंफर्ट जोन नहीं था, लोग नहीं जाते थे। तो हमारे पास विकल्प क्या है? मैं ट्रांसफ़र करके किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। The focus of employment is not government centric. After 13 years and promoted 3,000 people who half of them would have retired. Hello and welcome to this episode of On the Sidelines. Today we have with us a very special guest who has taken some remarkable initiatives to streamline school education and college education in Jammu and Kashmir. He is someone who is also credited and also criticized for implementing the annual transfer policy in whole of Jammu and Kashmir. Let's welcome Mr. Alok Kumar, Principal Secretary to Government, Department of Higher Education and School Education. Thank you so much for spending your time with us. आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं डिपार्टमेंट में जिनसे चाहे एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, कितना स्ट्रीमलाइन आपको लगता है कि एजुकेशन इस वक्त हो रहा है? देखिए, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट और यूटी विच हैज़ रोल्ड आउट ऑल द प्रोविजंस ऑफ एनईपी। हमने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर दिया है, करिकुलम बना दिया है। वी आर डेवलपिंग all the cells which we have to do in schools. Research facilities को improve किया है। Where we do not have adequate infrastructure, we have made a hub and spoke model where the colleges which have adequate infrastructure for getting research conducted, they have been identified as hubs, and the colleges in the vicinity or in the catchment area are as spokes. And in course of time, all the colleges, all my degree colleges would have a research center and a research facility. So we have, I would say that we are right on the track, and by 2030, it would be up and kicking. Okay. So how many colleges are there in Jammu and Kashmir? 142. 142. And do you think these colleges are well equipped and No, sufficiently? we have, there are some gaps. Infrastructure gaps are there. We are trying to address that. Government of India is helping us in this. We have RUSA schemes 1 and 2 have completed. RUSA 3 RUSA is the Rashtriya Uchitar Shiksha. It's basically upgradation of infrastructure. 1 and 2 we have completed the schemes. RUSA 3 is in progress. It would lead to substantial improvement of the infrastructure in degree colleges here. Achha. Our rankings are improving. 50 of our colleges are ranked by NASC. Rest are in the pipeline, and we hope to have good ranking B and above for all our degree colleges. 2 of the colleges have also been ranked so well that they have been made autonomous colleges. The progress is on track, and I have no doubts in my mind that Jammu and Kashmir would be a hub of higher education, where we have also introduced combined university entrance test, which has been conducted by NTA this time, and on the basis of the scorecard in that exam, we would allot seats in the colleges. It is also expected that the students from outside would also evince interest in the kind of in the colleges here where we have developed adequate facility. जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, तो रैशनलाइजेशन की बहुत एक समस्या रहता है। तो आपने रिसेंटली यू हैव बीन आल्सो क्रेडिटेड एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस ट्रांसफर पॉलिसी ऑन ग्राउंड। तो रैशनलाइजेशन को लेके और ट्रांसफ़र पॉलिसी को आप कितना देखिए, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ टीचर्स होने चाहिए। वो इस वजह से नहीं हो पाया, और उसमें दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि लोगों ने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करा लिया, सब शहरों में रहने लगे। अच्छा। इस वजह से रूरल एरियाज़ में या फार फ्लंग एरियाज़ में
उतना बड़ा कंफर्ट जोन नहीं था, लोग नहीं जाते थे। अब इस रैशनलाइज ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से हम रैशनलाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो हैं जो जहाँ थे, टीचर्स को हम भर रहे हैं, और उसका एक ही माध्यम था, ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हु हैव ओवरस्टेड इन अ प्लेस। अच्छा। फ़र्ज कर रहे हैं किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, वहाँ 50 टीचर होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। उन सरप्लस टीचर्स को ही निकाल के तो हम दे सकते हैं दूसरी जगह में। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी हमारे पास रिक्रूटमेंट के चैनल्स ओपन नहीं हैं, हम फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, सब पर फ्रीज लगा हुआ है, बिकॉज वी हैव अपॉइंटेड लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स बाय वे ऑफ द स्कीम विच वी ऑपरेटेड, रहबरे तालीम स्कीम। तो हमारे पास विकल्प क्या है? मैं ट्रांसफ़र करके किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे रैशनलाइज करूँ? और रैशनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स ही तो होगी। स्टूडेंट्स तो जो जहाँ है वो हैं ही। तो नॉन टीचिंग में आपके पास कॉलेज डेवलपमेंट फंड से कुछ ऐसे मुलाजिम नहीं है? नॉन टीचिंग इज नॉट a matter of great concern Okay, for me. that's not a concern. Non-teaching is an auxiliary part. I am interested in rationalization of the teaching staff. Non-teaching will happen. वो हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत सराहना काम किया तो इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको लेके आप क्या क्या इकदाम उठा रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमने जैसा आपको बताया कि हमने सारे प्रावधान रोल आउट कर दिए हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या वो हायर एजुकेशन हो। एंड आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट जम्मू एंड कश्मीर वुड रैंक amongst one of the top UTs or states who have implemented almost all the provisions of NEP. अच्छा, आप बाहर रहे हैं, आप यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, उसके बाद आपका एक अपना असेसमेंट है ऑन ग्राउंड, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में चूँकि प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, यू हैव वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस हु आर ऑफरिंग कोर्सेज हेयर, तो डू यू थिंक देयर आर गोइंग टू बी सम टाई अप्स with the national international universities? इंडस्ट्री और एकेडमिया में एक सिनर्जी रहे, ये भी NEP का एक प्रोविजन है। Okay. और इस संदर्भ में बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे MOUs हुए हैं, न्यू मेमोरेंडम्स बने हैं जिसमें इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि हमको ऐसे एम्प्लॉयमेंट की, ऐसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उस तरह से हम कोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारा फोकस है नॉट ओनली इन इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन बट टू वोकेशनलाइज दैट एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड कीपिंग एम्प्लॉयबिलिटी as one of the central focus. The legerdemain of my whole exercise, of the government's whole exercise, is that once you take your degree, you become employable as well. And the focus of employment is not government centric. आप self employment भी करें. If you're skilled, if your skills have been honed and given a chance, you would set up your own. We have experience of many unicorns developing here. कई टीचर्स का ये भी शिकायत है कि उनको 2013 में उनको जो है प्रमोट किया गया, लेकिन उनको वो मुआवजात नहीं मिले, या कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हेडलेस भी है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। There have been governance deficit of sort in Jammu and Kashmir. Those are being rectified. You must have heard that recently we convened the DPC after 13 years and promoted 3,000 people who half of them would have retired. Which is a remarkable thing. Which is, we are in the process. As I told you, there was a governance deficit. For whatever reasons, I would not like to go into those reasons at the moment. But we are trying to set on course whatever we have not been able to do in the past. आपका स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज हो, ड्रग्स एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है। We are conscious आपने of it. बहुत काम किया इस पे और आपने बहुत इकदाम उठाए। We are conscious of it, and all the steps that need to be taken to keep the youth away from
drugs, they are in place. We are monitoring it very closely. All the government guidelines are being followed. And the because of the encouragement to sports and extracurricular activities, the attention of the students who are the vulnerable group for being attracted towards drugs, that is being minimized by giving great spurt and fillip to sporting activities. You would see, prior to school education department, I was handling youth services and sports. Yes. Participation of youth in sporting activities has increased manifold. Every district, every panchayat has a play field. Every district would have a night playing facility. You move out and you will see students and children playing. This has the potential of reducing the incidence of being attracted towards drugs. Besides, we are taking all steps to popularize and disseminate the information regarding the deleterious effect of drugs, which would keep the youth of our UT away from it. All steps are being taken at all levels, and all the departments are contributing their bit. We acknowledge that it is an issue, but I am sure with the efforts which this government under the leadership of the Honorable Lieutenant Governor is taking, we would come out of this.